हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर जो हमारा है स्टिल चैप्टर नंबर 3 के ऊपर पढ़ रहे हैं। हम सोशल फैक्टर्स को ही स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल फैक्टर्स जो हमारे के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके जो इम्पैक्ट है उसको जो है ना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है तो उसके अंदर हमारा डी पॉइंट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और सोशल स्टेटस के दरमियान। अगर वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम गलत डिसीजन मेकिंग कर लें। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज इफेक्ट द कंज्यूमर स्पेंडिंग सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में हमारे इलाके के अंदर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सोशल स्टेटस के ऊपर, हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर पड़ता है। These issues demand special attention from the business and businesses as they have to develop the policies, support system and informative programs to address them and also consider these factors while introducing products and services in the market. Businesses are also expected to create as many job opportunities as possible to contribute to the government's role in addressing these issues. This could add to the financial burden on the business. Moreover, businesses have to define their target markets around different income groups, such as luxury watch company like Rolex would not advertise in the classified section of the newspaper. Similarly, Imtiaz supermarket target the middle income to the lower income segments by claiming to have the lower prices and large variety of brands under one roof. A promotion offer on grocery items from Imtiaz supermarket would have to have mass reach to all middle income and the lower income segments as targeted. तो इसको देखते हुए यानी कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो जाएगी कि रोलेक्स को तो आप नहीं करोगे ना बेटा हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट, उसको एक मखसूस क्लास के लिए मखसूस वे से आप एडवर्टाइज करोगे, और जो इम्तियाज सुपर मार्केट को करोगे उसको आप डिफरेंट वे से करोगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। अच्छा, इसी हम जब सोशल फैक्टर्स को पढ़ते हैं, हेल्थ और एजुकेशन का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हेल्थ का इम्पैक्ट इस तरह से होता है कि हेल्थ and the well-being are important for businesses to prosper in a society. Healthy individuals can contribute to economic progress in a country. Social indicators such as life expectancy, birth, death rates direct businesses to formulate an appropriate strategy. Birth rates and the life expectancy are important social indicators relate to health that businesses use while doing business planning. For example, a higher birth rate would indicate a greater need for the baby products such as formula, milk and diapers. Life expectancy indicators could have the vital implication for the health insurance companies as they market their insurance plans and the health plans. Also, a nation with a higher life expectancy is equipped with a larger labor force and has the positive implication for businesses such as manufacturing and production industries. Moreover, for industries related to drugs, pharmaceuticals, medical equipment, and the health and the well-being logistics, statistics are the important factor to devise a business strategies. जहाँ पे health देखिए वीक होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, तो उसके मुताबिक फिर आपने अपने बिजनेसेस की बेटा स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कहता है कोविड-19 था has changed the business scenario for the entire world, where there have been the positive growth opportunity for pharmaceutical companies and communication technologies industries such as travel, tourism have been affected adversely. Lastly, during the COVID-19 business all over the world was affected heavily due to the lockdowns, and some countries these lockdowns lasted several months. The business learned how to work around the restrictions and stay afloat and relevant to the market. For example, we saw in Karachi that after the few weeks of the total lockdown, the shopkeepers, retailers, wholesalers, mobile market, appliances sellers, etc. all posted banners on their closed shops with their social media contacts for order and home delivery. They
all were forced to create the social media contact with their potential buyers and prove the social media platform as an alternate to them. Similarly, जिस तरीके से अब कोविड के दरमियान इस तरीके से सोशल मीडिया खुल के सामने आया, एजुकेशन का बड़ा रोल है इसके अंदर बेटा. Businesses compete in a global economy that requires increasingly high level of education and training. Illiteracy among the population threatens the ability of businesses to compete on a global level. If a country falls behind other countries in education and training for its workforce in science, technology, math and engineering, it puts businesses at a disadvantage in competing globally with better educated workers. Moreover, companies also adopt their advertising and communication according to the literacy and awareness of their target market. Literacy and education also affect business expansion into other countries where there is a large business potential, but setting up operations and transfer of technology becomes very difficult for the proper human resources unavailable in the country and the region. There is another side of the education and skill set. Traditionally, the directly qualified professionals from education and training institutions were regarded as the hot cakes in the market, and they were highly paid. This is the case today as well. However, a trend also has pretended in the market that it has generally acceptability. According to the many reports, people with no college degree also given jobs in the many multinational organizations based on their ability to problem solving and teamwork. Google is a leading example of such hiring. They give employment seekers with real world problems and they gauge their ability to solve it and handle it. क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं. बात देखिए, गूगल तो एक मिसाल है. इसके अलावा एजुकेशन का होना बेटा बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन ममालिक जहाँ पे 100% वहाँ आप देखिए कि प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी. हम ये तो नहीं कह सकते अनएजुकेटेड ज़्यादा समझदार नहीं होते, लेकिन बहरहाल एजुकेशन से ग्रोथ का चांस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. स्किल आती है, स्किल सेलेबल होती है, जॉब मिलती है और जॉब से फिर आपके जो इनकम का जो आपका जो गैप होता है बेटा वो ख़त्म होता है. अगला इसके अंदर पॉइंट आता है कि लॉ एंड ऑर्डर. Any unlawful harmful act related to the loss of a job in a business due to robbery, theft, corruption, hijacking impacts the businesses and the environment it operates in. अब देखिए पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. आप देखें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं है वो यहाँ आने से डर रही है. अब जो तो काम कर रहा है वो तो फंसा भी हुआ है एक तरीके से, लेकिन नहीं आ रहे. सरमाया नहीं आ रहा. सरमाया ना आने की वजह लॉ एंड ऑर्डर है. अफगानिस्तान सरमाया नहीं जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर है. इस वक्त आप देख लें कि इजराइल के अंदर नहीं जा रहा. इस वक्त आप देखें राइट नाउ यूक्रेन में नहीं जा रहा. लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है. तो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, अब हालांकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत अच्छा है. बहुत अच्छे तरीके से उन्हें कंट्रोल किया. लोग जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेफ हैं, साउंड है, पैसा कमा रहे हैं. लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, पता होगा कि गवर्नमेंट टैक्सों में या वैसे हमसे ही पैसे छीन लिए जाएंगे, उस मुल्क के अंदर बेटा कोई भी नहीं फिर जाता. तो इस एंगल से भी चीज़ों को देखना होगा कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर के, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है. नेगेटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ईदर स्पेसिफिक विसिनिटी, city, entire country would affect the business negatively as well. The following are some negative effects of an unfavorable law and order situation. Loss of staff and customer होगा. Insurance security cost become expensive हो जाएगी. Loss of profits due to stolen goods from businesses है. Business lose skilled people resulting to decline in productivity होगी. Business spend money on installing effective security measure है. Alarm, burglar proofing करना पड़ेगी. Cost of damage to property increasing and the businesses pay higher insurance premiums to the project themselves. Lower profit affect the decision to expand and employ the more people होगा. Crime causes increase in health cost of the employees due to the injuries, stress होगा. Discourage foreign investment होगी. Reduce tourism होगी और impact होगा negatively businesses के ऊपर बेटा. During the period of a political turmoil in Karachi, many businesses were threatened by extortionists and they closed their units in Karachi and relocated themselves in other parts of the Pakistan, maybe in Bangladesh, maybe other part of the world. बहुत सारे लोग अपने कारोबार बंद करके चले गए, दुबई शिफ्ट हो गए बेटा. क्यों है? क्यों? एमक्यूएम कराची के अंदर बैठी हुई थी, वो भत्ता मांगती थी जो भी आप काम करते थे.
तो अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ फिर, और आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए बेटा। तो इन फिर ख़राब हालात को ख़त्म करने के लिए जो है ना, फिर आपको ये सारे के सारे मामला जो है ना करना पड़ते हैं बेटा। ठीक है, अब जब पेस्टेल को हम आगे स्टडी करते हैं तो इसके अंदर लीगल एनवायरनमेंट भी होता है जो आपको इफेक्ट करता है बिजनेसेस को। यानी कि समझ लें कि वैसे तो PEST टेक्नोलॉजी आना चाहिए था, E और LL यानी कि लीगल एनवायरनमेंट के लिए हम इसको करते हैं कि बिजनेसेस को इफेक्ट करता है आपका। द रोल ऑफ लेजिस्लेशंस इन बिजनेस क्या होना चाहिए? द लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेसेस। A country's law regulates business practices, define business policies, rights and obligations involved in business transaction. For example, कह रहा है business law may be make a business or a transaction illegal, impose conditions on certain businesses, regulate the rights and duties of a people carrying out business in order to ensure the fairness, protect people dealing with business from harm caused by the defective services. Ensure the treatment of employees is fair and undiscriminatory. Protect investors, creditors, consumers. Regulate dealings between businesses and suppliers. Ensure a level playing field for competing businesses. अब ये सारे के सारे काम करना पड़ेंगे अगर लॉ है तो, और उसी तरीके से अगर लॉ होगा तो फिर कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी प्रोटेक्ट होगी बेटा। It is also important to know that the government can change the rules and regulation concerning businesses from time to time. Therefore, to be in a good side of the law, managers should ensure that they are up to date with the laws. जो लेटेस्ट लॉ बन रहा है, बन चुका है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनीज को। Here are the some illustrative examples of how businesses can be affected by government policies. In 1970 प्राइवेट सेक्टर was nationalized in पाकिस्तान। भुट्टो ने कंपनीज को नेशनलाइज किया था बेटा, और नेशनलाइजेशन का एक्ट बना था 1970 का। वो बहुत गलत काम हुआ था। उसकी वजह से जो प्राइवेट लोग जिनकी कंपनीज बनी हुई थी वो डर गए, खौफ हो गए। अब जो तो जिनको नेशनलाइज हो गए बाकी लोग बाहर भाग गए, अपना पैसा लेके चले गए बाहर की दुनिया में बेटा। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन से जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा वो बंद हो जाता है पूरे का पूरा ही। इन 2007 वो ऑयल कंपनीज ऑपरेटिंग इन Orinoco region, Venezuela, were required by the government to hand over majority ownership in the businesses to the state. वेनेजुएला ने भी यही किया बेटा आपकी साउथ अमेरिका के अंदर। In 2007, large shipment of corn to Europe from United States were found, included the genetically modified corn थी वो। Although this was legal in US, it was illegal in European Union. This shipment had to be returned to the US. तो कानून को समझना, कहाँ कौन कानून है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, और इस वजह से बड़े मसले मसाइल आपके कारोबार को बन सकते हैं। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ है, कंपनीज लॉ है जो कि आपके कारोबार को इफेक्ट कर सकता है। इन पाकिस्तान, इफ अ बिजनेस सेटअप इंटेंड्स टू फॉर्म अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट ऑपरेशंस, वाइंडिंग अप द कंपनीज, प्रोवाइडिंग इन द कंपनीज एक्ट 2017 एक्ट issued by the Security Exchange Commission of Pakistan (ACCP). The Act regulates companies for protecting interest of shareholders, creditors, other stakeholders, general public, and inculcate the principles of the good governance. Companies are required to comply with the requirement of Act, for which they will be required to incur certain cost with respect in the incorporation, human resources, audit of a financial statement, holding of annual general meeting, record keeping. The companies which do not compliance with the requirement of the act will be subject to the penalties imposed for the relevant offense. फिर पार्टनरशिप लॉ को समझना पड़ेगा आपको। The law relating to the partnership business in Pakistan is the Partnership Act 1932. The Partnership Act includes the procedure of registration and resolution of firms, rights, duties, partners कैसे होंगे बेटा। In comparison to the company's partnership, firms have ease of doing business as the requirements applicable in companies for annual filing of returns होना चाहिए, audit of financial statement हो, holding of annual general meeting हो, are not applicable on the partnership firms। क्योंकि वो नहीं होंगी तो इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल यानी कि कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको इस पार्टनरशिप के लॉ को पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस पार्टनरशिप को हमने कायम रखना है। तो बाय लॉ हमने इसको रजिस्टर करवाना है।
Employment law है. Each country has employment laws. Purpose of the employment law is mainly to provide the protection to the employees against unfair treatment for exploitation of employers. Business organization as employers are directly affected by employment laws. They need to be aware of the employment law in each country in which they operate and understand the consequences of breaking the law. क्या होगा? Are failing to comply with the regulations. क्या पे करेंगे हम बेटा? Here are the some aspects of the law. Minimum wage है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे सजा होगी. ठीक है, हमारे मुल्क में तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन बेटा यूरोपियन ममालिक में, आप वेस्टर्न ममालिक हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है ना. इससे तो आप कंपनी बंद कर सकते हैं अगर आप मिनिमम वेज को फॉलो नहीं करते. वर्किंग कंडीशन कैसी आप एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हो. वैरायटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस माइट स्पेसिफाई मिनिमम एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशन सच एज मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क पर वीक. हर मुल्क है यूरोपियन में एवरेज 35 घंटे हैं. अगर आपने काम करना है 5 दिनों में करें, 2 दिनों में करें, 3 दिनों में, वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी. 35 घंटे पर वीक आपने काम करना है, तो उसे आप मंथ से कर लें. मंथ से करेंगे तो क्या होगा? There might also be laws relating to the maximum retirement age and employment of children. क्या होगा? Working conditions are also covered by health और safety laws है. Unfair dismissal नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जिसको चाह रख लिया, जिसको चाह निकाल लिया. You couldn't do that better. Employment law might give employees certain rights against unfair dismissal by an employer. An employee who is dismissed from work might bring a legal claim for unfair dismissal. The employer must then demonstrate that although the employee has been dismissed, the dismissal was not for a reason or under circumstances that the law would consider unfair. When an employer is found guilty of unfair dismissal, it might be required to re-employ the individual who has been dismissed, or more likely pay him for her substantial compensation. अगर किसी को गलत निकाला है, कोर्ट चला गया, कोर्ट फिर उसको दोबारा कहेगी आप इसको रखो बेटा, और जितने सालों को तक आपने इसको निकाले रखा उसके पैसे देने पड़ेंगे. फिर रिडंडेंसी का लॉ है. इन सम कंट्री डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिडंडेंसी इज नॉट अनफेयर डिसमिसल provided the discrimination is not shown in the selection of their individual employees should be made redundant. However, a country's law may require the employer to consider transferring an employee to another job before deciding that the redundancy is unavoidable. Failure to consider transferring employees to other work would mean that the dismissal for redundancy are unfair. फिर इसमें फंस जाएंगे. डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी. Some countries have extensive laws against discrimination, including discrimination at work. For example, employers might be held legally liable for showing discrimination against various categories of employees or customer, and also for discrimination shown by employees against colleagues. There are laws against discrimination on the ground of a physical disability, gender, race, religion, sexual orientation और age. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं का काम कर रहे हैं तो रिलीजन की वजह से आपको पॉइंट आउट किया जाए, कलर की वजह से किया जाए, जेंडर की वजह से किया जाए बेटा आपको, तो वो आपका वो डिस्क्रिमिनेशन होगा और आप सू कर सकते हो कंपनी को भी और पुलिस को भी. जेंडर इक्वालिटी मेनी कंट्री पाकिस्तान हैव लॉज ऑफ एंटी हरासमेंट टू एलिमिनेट द जेंडर बायसनेस, वुमेन प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस होना, जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी इन द सोसाइटी होना, और उसको इक्वल ट्रीट करना ही बेटा सबके हक में और कानूनी तौर के ऊपर बेहतर है. फिर अगला लॉ आ जाता है इसके अंदर. आप हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ को देखते हो. हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ प्रोवाइड रूल्स रेगुलेशन अबाउट मिनिमम हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड इन देयर प्लेस बिजनेसेस फॉर देयर एम्प्लॉयज. Standard of health and safety law vary substantially between countries, although in countries with well-developed economics, health and safety standards are usually very high. It is also important to recognize that health and safety regulation can impose significant requirements on employers, and the legal consequences of failure to comply with the regulation could be serious for the company or directors, managers, or employees responsible. In some countries, employers are required by law to provide safe workplace for their employees. Safe workplace is one where employees are not exposed to the unreasonable physical dangers, unreasonable risk to health. In some countries, there are also means to place work where employees are not subject to discrimination, bullying. Risk of health and safety could be reviewed regularly by means of formal risk assessment.
तो ये लॉज जितने बने होंगे आपके मुल्क के अंदर या इंटरनेशनल तौर के ऊपर, आपको बेटा इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस सवेयर हो सकते हैं। चले अगेन बेटा हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर कोई भी बंदा पिन पॉइंट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा बेटा, और आप बच जाओगे, कत्ल करके बच जाओगे। लेकिन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं करोगे यूरोपियन ममालिक के अंदर, या अगर आप मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा बेटा, यू हैव टू पे अ हेफ्टी पेनल्टी, बंद भी किया जा सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। डेटा प्रोटेक्शन का लॉ है, some countries have fairly strict data protection laws. The pursuit of data protection law is protect individuals with regard to the personal data about them that is held and used by other person. Data protection legislation is designed to protect the private individual against other collecting, holding, using information about them without their permission. अब देखें ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप को किसी कंपनी के साथ रजिस्टर किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था टेस्कोस वगैरह इस तरह के सुपर मार्केट यूरोप में मौजूद हैं, आप उनके साथ उनको अपना डेटा दे देते हो, नाम, एड्रेस, एज, सारा कुछ देते हो, फिर वो अपना कार्ड बना के देते हैं और उनके पास तमाम कस्टमर्स का डेटा होता है। अगर वो डेटा कहीं लीक हो जाए, किसी बंदे तक पहुंच जाए, तो वो उसको अनफेयर मीन्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको भी प्रोटेक्ट करना है बाय लॉ आपने, तमाम कंपनी से, जिसको भी आपने, चाहे वो बैंक से, लेकिन बैंक के पास बड़ा आपका डेटा होता है, अगर वो कहीं से लीक हो गया, किसी को सेल कर दिया गया, तो माइट बी अ बिग डेंजर। इट माइट कंसिडर इलीगल, फॉर एग्जाम्पल, that any organization should be able to gather, hold personal data about individual without justifiable reason, make sure the personal data without individual's permission. Someone holding and using the personal data about individuals should also be under the legal obligation. Make sure that the personal data is accurate and secure. Ensure that the security of the data, so that it might be available, it's not made available or accessed by any other person who does not have any right to have it. Cyber laws in here. It is the newest area of legal system. It applies to internet and internet-related transactions. This law was enforced to safeguard the individual's information and confidentiality of clients where transactions are made over some network. Collecting, storing, retrieving or disseminating of individual data बेटा, तो ये नहीं कर सकते आप। तो साइबर लॉज बने हुए हैं, किसी का डेटा किसी को बेच देना, फरोख्त कर देना, ये भी बहुत ज़्यादा समझने की सज़ा है इसकी। फिर आपका कंपटीशन लॉ है। सम कंट्रीज हैव लॉज टू एनकरेज फेयर कंपटीशन इन मार्केट्स एंड वाइड द एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। मोनोपोलीज हमारे मुल्क में भी है। जैसे मैं आपको बार बार चीनी की मिसाल देता हूँ कि ये चीनी वाले जब इकट्ठे हो जाते हैं किसी शादी ब्याह के ऊपर, मर्द के ऊपर, अगले दिन 5 रुपये चीनी, 10 रुपये चीनी बढ़ जाती है। कोई लॉ नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। लॉज तो बने हुए हैं, अब लॉज बनाने वाली ये खुद है बेटा, तो इस वजह से इनकी इम्प्लीकेशन नहीं होती। लेकिन दुनिया में नहीं है, दुनिया में मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन छाई पड़ी हैं, लेकिन जो आपकी 20-25 जो डेवलप ममालिक हैं बेटा, वहाँ मोनोपोलीज नहीं है, मोनोपोलीज को डिस्करेज किया जाता है। देयर माइट बी अ लॉ टू प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम अक्वायरिंग मोनोपोली कंट्रोल ओवर अ मार्केट। अ मोनोपोली ऑफ अ मार्केट इज थ्योरेटिकली 100% कंट्रोल ऑफ अ मार्केट, यानी कि ऑयल वाली 10 कंपनीज और 10 की 10 एक ही फैमिली के पास हो, ये 100% कंट्रोल है, नहीं होने देंगे। Where only one entity supplies a product or services to the entire market. In practice, monopoly is usually defined as significant influence on the market. When a company has a monopoly of a market, it might engage in unfair business practices, such as charging higher prices that they would be able to charge in a more competitive market. अब जैसे चीनी की हम पे कर रहे हैं, the serious risk of anti-competitive behavior from monopolies is the main reason for laws restricting them. When a company grows to the point when it becomes a monopoly, a government organization might carry out an investigation with a view to deciding whether measures should be taken to protect our public. Similarly, when two companies propose a merger that would create a new monopoly, a government organization might investigate the proposed merger with the view of recommending whether it should be allowed to happen and whether any conditions should be placed on the merger to order to protect the public. ठीक है, अब वो मर्जर भी नहीं होने देंगे,
मज़े की बात है, बाहर अगर लगा कि यार इनके पास पहले 30% मार्केट है, अगर 2 मिल गई तो 60% मार्केट उसके पास हो जाएगी एक प्रोडक्ट की, तो ये तो पूरी सबको खा जाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा, कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लिहाजा वो फिर आपको मर्जर भी नहीं होने देंगे, उसके अंदर भी हर्डल आ जाएंगे। बी एंटी collusion regulations हैं। Collusions occurs when 2 or more business entities secretly agree to do something for their mutual benefit that is against the public interest. Typically, it is a secret agreement to raise prices and avoid competition on process. In any country, collusion is a criminal offense. फिर price control है। In some countries, the government might impose price controls on certain key products, services, such as price of essential services to consumers, water, electricity, gas. Official bodies might be established to monitor the activities of utility companies, providers of water, sewage, electricity or gas, and might have powers to restrict their activities. Official approval might also be required for any increase in prices. तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, जैसे हमने ओगरा बना तो दिया है, लेकिन बात ये कि हमारे जैसे मुल्क में ओगरा के एक या दो बंदे खरीद लेते हैं, अपनी मर्जी की प्राइसेस इम्पोज हो जाती हैं बेटा। Consumer protection. Most countries have legislation in place that aim to protect consumers of goods and services. These measures include contract law हो गया, sale of goods regulations बनाई गई हैं ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। Sale of goods legislation क्या है जी? Such legislation usually specify that contracts for purchase of goods या services, there are certain terms in the contract that a consumer may rely on. For example, a title. The buyer is entitled to assume that the seller of goods actually owns them, has title to the item. Description of goods क्या है? The buyer is entitled to assume that any goods that purchase corresponded to the seller description of these goods. कि उसमें क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट वो लिखे हुए हो, कितनी वेटेज है वो लिखा हुआ हो, प्राइस लिखी हुई हो, क्वालिटी. All goods supplied in the course of the business must be satisfactory quality. This means that they must be satisfactory for the purpose to intended. If a person buys a washing machine that does not work, the seller must repair it, replace it or pay for the refund to the consumer. अब ऐसा ना हो कि आपने वॉशिंग मशीन ली है तो बस लिए तो लिए, लेके जा रहे हैं वापस तो वापस नहीं ले रहा, तो ऐसे कानून बना दिए गए जिसके अंदर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो। Copyrights, patents and licensing. Copyright, patents, laws are necessary to protect intellectual property of individual businesses. Copyrights क्या है? Safeguard original creation का, such as writings हैं, art हैं, architecture हैं, music from being copied or reproduced. For as long as the copyright is in effect, the owner has the exclusive right to display, share, perform, license the copyright work. A patent is a registered right that gives the owner exclusive right or features to the processes of the inventories. A license is the permission to carry out certain business activities or practices under specific government regulation or certification body. अब ये कॉपीराइट के अंदर देखें ना, लाइसेंस फॉर एग्जांपल आप पैनाडोल पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, तो आप जो पैनाडोल की मेन कंपनी है यूके में या अमेरिका में आप जाएंगे, वो आपको लाइसेंस इशू कर देंगे कि जनाब आप डेली बेसिस की 1 लाख पैनाडोल बना सकते हो। उस लाइसेंस के तहत आप पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएंगे और पैनाडोल बनाना शुरू कर देंगे। 1 लाख से तजावज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तजावज़ किया उनको पता चल गया तो वो आपको बंद भी करवा सकते हैं, जुर्माना भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब उसने वो लाइसेंस क्यों देंगे? कोई शराइत होंगी बेटा कि आपने जो 1 गोली है उसके ऊपर 1 रुपया हमारा है, लाख गोली बनाएंगे डेली बेसिस पे आपने लाख रुपया उनको देना है, काम सारा आपने करना है, सब कुछ, मशीनें भी आपकी, प्रोडक्शन भी आपकी, सिर्फ लाइसेंस देने का या लाइसेंस की उन्होंने एडवांस आपसे फीस बहुत ज़्यादा ले ली, 1 करोड़ रुपया ले लिया और उसके बाद कहा जनाब आप इस लाइसेंस को 10 साल के लिए इस्तेमाल करें, 10 साल के बाद आप रिन्यू करवाएं, यानी कोई ना कोई कंडीशंस होगी। और पेटेंट और कॉपीराइट्स वगैरह होगा, पेटेंट या आपने कोई चीज़ बनाई है, गाड़ी बनाई है, जिस तरीके से बनाई है वो आपने लिख दी है, अब और कोई कंपनी और कोई बंदा उस तरह की, उस लेबल, उस लोगो, उस सोफिस्टिकेशन के साथ वो गाड़ी नहीं बनाएगा। आपके पास पैटर्न राइट है, अगर कोई करता है, नाम इस्तेमाल करता है आपका, उस तरह की करने की कोशिश करता है बेटा, तो वो आपकी मशीनें इस्तेमाल करता है, आपकी गाड़ी कोई ख़रीद के तोड़ के उसमें से चीज़ें निकाल के दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल करता है, फिर आपका वो पैटर्न राइट है वो आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करेगा और वो उनको आप सू कर सकते हो बेटा, और उनको आप बेसिकली कानूनी तौर के ऊपर बहुत सारा जो है ना आप उनको नुकसान पहुँचा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर लीगल इन्वायरमेंट होता है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
ये भी आपने देखना होता है एक्सटर्नल फोर्स के तौर के ऊपर कि किस तरीके से लीगल एनवायरनमेंट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके और एनालिसिस करके उसका हाउ वी कैन एक्चुअली, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स सेंसिबल लीगल सिस्टम that encourage growth and avoid the creation distortion in the marketplace. These law include rules and establish the clarify property rights हो गया, minimize the cost of resolving disputes, increase the predictability of economic interactions, provide the contractual partners with core protections against abuse. All these measures identify the prospect of a success for business activity in relation to the legal environment. Moreover, a business world would consider these measures to judge the level of risk involved in terms of the time, money involved in setting up. Business get a strategic analysis to understand the dynamics of the business environment and strategize their own objectives. A business manager examines many factors such as overall quality of economy, business environment, financial system, market size, rule of law, and the quality of the labor force before investing. There are now generally accepted ease of business indices that give a good insight into country's regulatory environment. World Bank ease of business index क्या है? Launching the year 2003 के अंदर World Bank ease of doing business report जाएगी. Ranking is essential of the business regulation across 190 countries, though evaluation of the World Bank is not the only one published to indicate the relative openness of a business environment in economy. The annual EODB ranking is often cited the most authentic indicator of the regulatory environment for the business operations. A high ease of doing business ranking means that the regulatory environment in such country is more conducive and starting and operating of the local business is easy. Ease of doing business index comprise of the 10 indicators on the basis of which the ranking is issued. 10 इंडिकेटर्स को देख के मेरा वर्ल्ड बैंक वाले और दूसरे जो इदारे हैं उसके मुताबिक फिर रिपोर्ट शाया करते हैं कि इस मुल्क के अंदर बिजनेस करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तमाम राय फिर आपको देते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेस कितना आसान है, गेटिंग क्रेडिट आसान है, कंस्ट्रक्शन परमिट क्या है, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना आसान है, रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी कितना आसान है, प्रोटेक्टिंग द मिनोरिटी इन्वेस्टर्स कितना आसान है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी के इश्यूज को क्या किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होता है इस मुल्क में, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर कैसे होती है, और पेइंग टैक्सेस का क्या मामला इस पर्टिकुलर मुल्क के अंदर बेटा। फिर उसके मुताबिक जो है ना ये लोग समझने के आपके लिए अपने बॉर्डर्स को जो है ना खोल देते हैं और आपके लिए वो इशू कर देते हैं लिस्ट, जिसको देख के आप अपना अगला डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाता है कि आया मेरी कंपनी इस मुल्क के अंदर जाएँ ना जाएँ, हम ये प्रोडक्ट बनाएँ ना जाएँ, हम नई फैक्ट्री लगाएँ ना लगाएँ। तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। इमरान खान के दौर में इसके ऊपर स्पेशल एम्फसाइज किया गया था और स्पेशली कोर्ट के ऊपर बेटा उन्होंने इसको देखा था और इस इशू को एड्रेस किया था कि जो मर्जी हो जाए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। और कुछ कामयाबी भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मामला ख़राब होते गए। आज आप देख लें कि हालात, हालांकि अब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर जो है ना ये एक कमेटी बनाई गई है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है और दूसरे ममालिक के अंदर जाके हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्ट करें। लेकिन अगेन बेटा वो बात आ जाती है कि जो मर्जी आपकी हायरार्की में से इसके अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन जो उसके अंदर जो मेन चीज़ बाहर का बंदा या मैं या आप देखेंगे वो देखेंगे यार कानून कवानीन इस मुल्क के कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे लिए पैसा ले जाना मुश्किल हो जाए, प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाए, बत्तेबाजी शुरू हो जाए। ये सारे के सारे फिर इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं बेटा। तो फिर उससे जो है ना आपको पता चलेगा, ये भी एनालिसिस करना है, यानी ये भी एनालिसिस के अंदर आपने रिपोर्ट बना के देनी होती है, क्योंकि एनालिसिस हो सकता है कि आपका अपने मुल्क की किसी कंपनी के बारे में हो, बाहर की किसी मुल्क की कंपनी के बारे में हो। तो ये तमाम एस्पेक्ट को जो हम अभी तक देख चुके हैं ना बेटा, इनको बड़ी डिटेल के साथ आपने देखना है और इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को समझना है और इन इश्यूज़ को आपने एड्रेस करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए बेटा। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 जो है ना मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हम जो है ना कल अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर हम पेस्टल को देखेंगे तो इसके अंदर फिर अब हमारे पास जो है ना बेसिकली
सिर्फ टेक्नोलॉजीज जो है रह गया है कि किस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे बेटा। तो इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर बेटा आप रब्ता कर लेना, पूछ लेना मुझसे। थैंक यू वेरी मच।